discussing advertisements. A few advertisements we already covered last day. So today let's see if you are having something you want some shops or house for rent. If you want to give your house or a space for rent, what will be, how will be furnished the advertisement? With essential details that should be there. If you want something or if you want to give available, that is रूम अवेलेबल या हाउस अवेलेबल लिख सकते हैं या रूम वांटेड लिख सकते हैं. किस तरह का एकोमोडेशन है जो देना चाहते हैं, टू लेट और रिक्वायरमेंट. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, साइज, नंबर ऑफ रूम, फिक्चर्स, फिटिंग्स, किस तरह का फर्नीचर्स वगैरह है. लोकेशन सराउंडिंग्स, इफ इट इज लोकेटेड नियर द बस स्टैंड या इन द मार्केट, नियर द मार्केट, नियर टू व्हाटएवर बी. And what rent you are expecting, इसका भी आप देना चाहते हैं तो मतलब कुछ ऑफिस या घर किराए पे लेना चाहते हो, उसका रेंट व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू लाइक टू गेट व्हेन यू गिव योर हाउस एज फॉर रेंट. कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर यू शुड गिव. ओके. So first let's write a question. To let wala. To let. Write a question. You are Ashish या Ananya of 10 Surya Vihar, New Delhi, and wish to let out a portion of your newly built house. Okay, newly built house को to let you like to let it out, मतलब किराए पे देना चाहते हैं. So just craft a box, make a box. To let you can give as a heading. उसके नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन से लेफ्ट साइड से अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए न्यूली बिल्ड हाउस इन सूर्य विहार, न्यूली बिल्ड हाउस इन सूर्य विहार. Full stop. 3 bedrooms with attached bath, comma a drawing cum dining room and a large kitchen. It's a large kitchen. 3 bedrooms with attached bath, comma a drawing cum dining room and a large kitchen. Car parking facility also provided. Car parking facility also provided. Full stop. Rent expected around 12,000 per month. Around 12,000 per month. Government officers preferred. Government officers preferred. Contact. क्या नाम दिया था? अनन्या. Number 10 Surya Vihar, Delhi, New Delhi, whatever. So to let, available on rent basis, the ground floor of a newly built house in Surya Vihar, 3 bedrooms with attached bath,
a drawing cum dining room and a large kitchen. Car parking facility also available. We also provided. Rent expected around 12,000 per month. Government officers preferred. Contact or contact number or number भी लिख सकते हैं रनिया 9111 Okay, is it clear? Hope so. This is when you wish to give your house for rent. Now, if you want same like that, any room or any house should be same manner. You want to know one thing. You require a house, yeah, accommodation. Accommodation wanted. Write a question for accommodation wanted. You are the sales manager of ABC India Limited. ABC India Limited, Jaipur. Write an advertisement to be published in a newspaper for suitable accommodation to be used as a guest house for the company. To be used as a guest house for the company. If you can write as a heading, I'll write a question once again. You are sales manager of ABC Company Jaipur. Write an advertisement to be published in a newspaper for accommodation on rent to be used as a guest house for the company. Clear? So let's see. You can write accommodation wanted करके नीचे लाइन में लिखो ABC company Jaipur wants suitable accommodation on rent to be used as a guest house. To be used as a guest house. Minimum area of 2000 square feet. Minimum area of 2000 square feet in a posh area. Posh मतलब कुछ developed area. In a posh area in Jaipur. Minimum area of 2000 square feet in a posh area in Jaipur. Preferred. The house or flat should be fully furnished. The flat or house should be fully furnished. Interested parties may please contact any address you can write and Rajiv ABC India ABC company
ABC company, Jaipur. नहीं, Shastri Road, Jaipur. Mobile 1234567890. Any number you can provide. Can Rajiv, ABC company, Shastri Road, Jaipur. Hope it's clear for you. To let and accommodation wanted. Let's move on to new question. Lost and found. So word itself हमारा कुछ आप खो गया हो या you found something. It is lost and found. If something of yours is lost or found, the essential details you have to furnish in the lost and found. Essential details are begin with lost or found. Lost या found के साथ begin करना है. Give brief physical description. क्या चीज आपको मिला है, अगर कोई वॉच है तो उसका कुछ डिटेल, और या पर्स है या मोबाइल है, एनी सब डिटेल्स यू कैन गिव. आइटम क्या है वो स्पेसिफाई करना है. अगर आप को खोया है और आप कुछ रिवार्ड देना चाहते तो वो उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं. आपका वेरी वैल्यूबल सर्टिफिकेट कुछ खोया और आप मिलने वालों को कुछ रिवार्ड देना चाहते तो वो मेंशन कर सकते हैं. एंड एंड विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ओके. So you just write a question. You have lost your purse, wallet, whatever wallet. Draft an advertisement to be published in a local daily. It should not exceed 50 words. Okay, you can write lost and found, same box. Don't forget to make a box for it. Right. Lost, इधर से start करो. Lost brown leather pearls in Rajasthan roadway bus. While traveling between Tong and Jaipur. Tong and Jaipur. Full stop. Besides cash, it contains some very important bills. It contains lost black leather wallet in Rajasthan roadways bus while traveling between Jaipur and Tong. Full stop. Besides cash, it contains some very important bills and receipts and credit card and debit card. Full stop. Finder, those who find it. Finder will be suitably rewarded. Please contact. क्या नाम दिया था? Anything. Anil. Please contact Anil. B20 Tong Road, Jaipur. Contact 9461 ting. Okay, that's the lost and found.
I'll repeat the lost brown leather wallet in Rajasthan Roadways bus while traveling between Tonk and Jaipur. Besides cash, it contains some bills and receipts, and debit and credit card. Finder will be suitably rewarded. Please contact Anil phone number B10 Tong Road, Jaipur. Any address you can give. That's for lost and found. Same lost and found में you found something, you found एक article में same loss की जगह found लिख सकते हैं. Reward के बारे में mention मत करना. Whatever thing details you can furnish about the thing you can give. Next is matrimonials. आपको मालूम होगा matrimonials क्या होता है. मैट्रिमोनियल में आपको when you are looking for, जैसे भारत मैट्रिमोनी आपको सुना होगा, when you are looking for a bride, आपके ब्रदर के लिए सुटेबल ब्राइड को ढूंढ रहा है या आपके सिस्टर के लिए सुटेबल ब्राइड ग्रूम ढूंढ रहा है. You have to furnish in that, you have to give the details. जो लड़का है या ब्रदर है उनका डिटेल देना है, और साथ साथ पर्सन जिससे शादी करना चाहते हैं उनका डिटेल भी चाहे किस तरह का. If you are very concerned about the religion and caste, you have to mention that. Particular profession के लिए चाहिए वो भी mention करना है. So begin with wanted or proposal invited. State boy girl है, boy girl के लिए ढूंढ रहा है या boy के लिए ढूंढ रहा है. Boy है तो girl के लिए, girl है तो boy के लिए. आपको boy होकर boy का ढूंढने का जैसा लिखकर कंफ्यूज मत होना. एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना है. किस तरह का प्रोफेशन है. Income you can mention. Age, height, complexion, build, slim है, fat है, whatever भी वो भी बताना. Caste, subcaste, religion, जो too much concerned about the religion and caste, you can furnish that also. Qualities क्या आपको, obviously all will be looking for a good quality वाला person. कोई भी एक cruel खड़ूस ऐसा नहीं choose नहीं करेगा. Obviously you can mention that also. If you are having good luck, you will get that partner for your brother, your sister. And with the address मतलब वो अखबार का एड्रेस लिखना, क्योंकि कोई भी इस तरह का लेटर में अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखते. You can mention the address of the box number of that particular. It is going through a newspaper, so no need to mention that. You can write. First question. A highly placed IT प्रोफेशनल, तो हम आज IT प्रोफेशनल के लिए लड़की ढूंढ रहा है. ठीक है. हाईली प्लेस्ड IT प्रोफेशनल सेटल्ड इन अमेरिका, सीक्स अलायंस विद एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल. तो शायद ये लड़का बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हैं. एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, एजुकेटेड और कल्चर्ड एंड टॉल गर्ल ऑफ पंजाबी फैमिली. ओके, पंजाब तो पंजाब का मुंडा होगा, पंजाबी लड़का होगा. दैट इज सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए नेशनल डेली. नेशनल डेली का मैट्रिमोनियल में देने के लिए एक है ना. सो हेडिंग विल नॉट बी लाइक दिस बिकॉज मेन हेडिंग है मैट्रिमोनियल. तो हम लिखते हैं bride wanted. Okay, heading will be bride wanted. So you can write from here. Next one, alliance invited for a very handsome, लड़का बहुत handsome है. ठीक है. Very handsome, tall and cultured IT professional, 28 years, 180 centimeter tall,
180 centimeter tall, NRI, settled in America as CEO, Chief Executive Officer, CEO of a reputed firm. Exceptionally beautiful, full stop करके, exceptionally beautiful, comma, highly educated and cultured girl between 21 and 25, and at least 5 feet 4 inch. 5 feet 4 inch tall. 5 feet, एक लाइन, दो लाइन, 5 feet 4 inch tall. From a good Punjabi family. From a good Punjabi family. Right to लिखे, box number 786, Hindustan Times, अमृतसर। हमारे पंजाब का सिंह ब्रदर, he is very handsome, settled in US or America, and is looking for an exceptionally beautiful girl, so we can write this as bride wanted. अभी हम कल एक खूबसूरत लड़की के लिए, जो आप लोगों से किसी का पिक्चर है, उसके लिए ब्राइड ग्रूम को ढूंढेंगे। इसके लिए आप अगले क्लास के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।